Hi guys, it's Dr. Zuri and this is my show The Legit Talks. Good evening and how are you? I hope that you guys are doing really nice and good. Okay, so again excited with this amazing session that I'm going to have with Shubhashis Ghosh. He I mean, pretty much different background, pretty much different lifestyle, pretty much different almost everything that he have done in his life. So he's going to talk about his journey. He's going to tell what all the questions that I have in my mind because he have done so much, and we would love to see these kind of people talking about their hardships, their sufferings, and everything. So we are going to have a conversation with him right now. So guys, let's. Oh, it was right. Hello. It I was cannot see you though. You just have to. hello Yes. everyone. Hello Dr. Hi, how are Zuri. you? I'm doing wonderful. And first of all, thank you for selecting my profile. Thank you for inviting me in this wonderful talk. And I'm feeling very much excited to share Thank my story. you so much. Right, No, that is right. amazing. Okay, so the people are joining, so I would just tell them like I just had a conversation with Subhashis just now and his wonderful wife, his beautiful son, and I felt so lively already. So I am pretty much excited to know his journey, and I hope that you guys also will enjoy this journey along the way, along with the session that we are going to have. So Thank thank you, you so much, thank you. Subhashis, for coming on my show and accepting my request to do this with me. The show is really lucky to have you. I have gone through the introduction that you have sent me. You have done so much. I was already in a question that Right. how am I supposed to It frame happened the like that. questionnaire for you? So it is pretty much, Right, yeah, very right. fascinating to me. So I would So love to know before what's telling your the story? whole story, I just like to tell that it's around 20 to 25% of what I do usually. So it's not that much big because I don't put 80 or 90% Okay. because so that people don't get bored. People will get people will think यार इतना लंबा है क्या पढ़ना है छोड़ो इसको बाद में Yeah. पढ़ते हैं. So that's why I kept it small. What seems to a very long for you. So let's start the story, the interesting Mm-hmm. story. So Mm-hmm. I was born a very mediocre Yes. person in a very loving family. So Okay. first, at the age of 7, I came to know Mm-hmm. that I have a defective heart. My heartbeat can go up to 200, Mm-hmm. 250 all of a sudden, right? So it was very shocking that time. So my parents took me to many doctors, many places Mm-hmm. to heal that. But most of the doctors told that no, it's a manufacturing defect, you can say. So it cannot be cured. Some doctors said yes, operation can cure this, but we were not uh, mm, brave enough to go for a Mm-hmm. operation, heart operation. So I started living with a Mm-hmm. defective heart. Mm-hmm. It's the frequency of this going my heartbeat 250 kind of thing is once in a week sometimes. If I Mm-hmm. do more exertion, more something physical work, then it comes in 2 or 3 days also. So Mm-hmm. in my adulthood, I learned how to um, keep it. Uh, what I can say, I learned how to uh, stop this. So it's not in my hand how it will come, but it was Mm-hmm. in my hand how to stop it. So I learned how to live Mm-hmm. with it. So it was okay. It was okay for me. Yeah. Uh, So
as because the reason I said I was a mediocre kind of a person uh, is because in school time, whenever any teacher asked me to tell something Mm. or make me stand to just read or something. So apart from this defective heart, Mm. my heartbeat goes double Yeah. duck 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 kind of thing, and Mm-hmm. I really felt क्या बोलूं क्या करना है. Yeah. I feel so much of nervousness, right? So it was there. So I never into any Mm. kind of activities in the school life. I always I was always a backbencher kind of a Yeah. person. Yeah. So life goes on. I went to engineering. Engineering, mein Yeah. I got very bad Mm-hmm. result. My year lag also there. So much of challenges. So that time it Mm-hmm. was like मतलब इससे अच्छा तो मतलब और कुछ हो जाता है यार. What is happening? So I am into so much of pressure. You can understand that my Mm. friends are going ahead and I am lagging behind. I couldn't cope up with all the subjects and all. So much of pressure, but still that also I managed. I got a job somehow. Uh, so after that, the most challenging thing came. I met with a bike accident, and it was a crush fractured. It was a crush fractured leg. It was a roadside Oh. accident. My leg got my tibia fibula got crush fractured. Crush fractured means it was four inch of bone was Oh. going outside my body. So there was a 4 inch of bone deficiency. From here, the Mm-hmm. doctors cut 4 inch of bone and they crushed and they put it in my leg Mm-hmm. for a better healing. So I was in and out of hospital that time more than 3 months, 4 months. It took around 2 to 3 years to put my left leg on ground. It was that kind of a accident. Gangrene happened. If Oh. gangrene happened, that means there is the only Oh. only Yeah. option is to That cut is the the leg. possible So it infection. Yeah. went till that. Doctor, I heard Yeah. that doctors were discussing in between Mm. them what to do. The gangrene happened. So now cut the flesh out, and after that, in the biopsy, if it comes gangrene again, then we have only one option. So they said like this in front of me. I was listening to that. So the time they do the dressing and all, I just Oh. see the bone without the flesh, Mm-hmm. and I took photos. So I was Mm-hmm. brave enough that time to take the photos of that. So there were so many things about this. I'll not go into deep because it Yeah. gives uh, a bit of uncomfortable feeling for people, not for me. I'm very comfortable telling on that story, but people feel uncomfortable when I say. They say don't exaggerate all these things. So we are not feeling well. So I'll not go into this. So many Mm. challenges were there, and after that, I was into a job where I met with my wife Mita. So she was with me on that challenging time. So I could understand that the the kind of pure, unconditional love was there, right? So that's why she was there in my Yeah. challenging time. My mother was there in Pune. It happened in Pune. So my mother was there in Pune all for more than 7 to 8 months. Mm-hmm. So a lot of sacrifices from my family because of all that challenges they did. And somehow I managed to Yeah. stand up, walk in my 2 legs, and I was very happy that I can walk, huh? At least walk. I could walk hardly 10-15 minutes on that time. Mm-hmm. After that, my left leg got some pain, so I mostly Mm-hmm. don't. I mostly don't
go anywhere where I have to keep walking and all. I, I always happy to stay back and Yeah. walk and sit in a sofa like this that time. So life goes on like this. I entered into, Mm-hmm. I am a Yeah. computer engineer, so I entered into MNCs that time. So I was Mm-hmm. into corporate, working for them, and life goes on like this. I got married in Mm-hmm. 2008. Right? In the year of 2011, uh, we Mm-hmm. got a son, and then also life goes on in 2014. Wow. uh, so everything got changed all of a sudden. Mm-hmm. The trigger point is when I was playing with Okay. my son. He was 2 or 3 years old, so much hyperactive. But when I was playing with him, I could understand that I am not Mm-hmm. physically fit enough to play with him. So that triggered me that if a child get a person like me for his playing company, then he will not uh, understand what is fitness. I was into fitness, I was into yoga in my childhood, so I could understand. Yeah. So this is not the fitness level which will encourage my son to be fitter. So that triggered me, and that time I Mm. started my fitness journey, and after that I started doing trekking and all. So that gave me motivation that yes, whatever happened, it was past. Now I can do something better, something extra. So I feel motivated that yes, Mm. I did a trek. I remember it was 16 kilometer going up and then 16 kilometer going uh, coming down in a single day. Mm-hmm. So that 32 kilometers of trekking, it was like I did 30 kilometers in a month or in 2 3 months altogether. And then when I could do the Oh. 32 kilometers of trekking in one day, so that gave me a kind of a motivation. Yes, so whatever happened, it's past. Now I can Mm. do something extra. Then the real story comes in 2016 Yeah. November. My son got into Don Bosco Lilwa, and Mm-hmm. right. So he got selected in a running event, and he got Yeah. Yeah. the second prize. So when he got the second prize, I thought, so let's do some running. I was searching for some running event. So it was in the Mm. 29th of January 2017. Mm-hmm. So I registered for 21 kilometers. Can you Okay. imagine? I never ran a single kilometer. I registered for 21 kilometers, half marathon. It's called half marathon. I registered for that. Mm. It was around 59, 60 days. Mm. Uh, then I uh, sent the link to one of my friends and requested him that I'm एक link भेज रहा हूँ तो register कर ले. He thought some कोई party वार्टी होगा. He said okay. In 5 minutes, 5 minutes he called me back और said यार पागल हो गया 21 किलोमीटर जिंदगी में दौड़ा नहीं कैसे करेंगे. आई सेड यार मैं भी नहीं दौड़ा ज्यादा से ज्यादा क्या होगा नहीं कर पाएंगे उससे ज्यादा Mm. तो कुछ नहीं होगा. He said हाँ बात तो सही है मतलब कर रजिस्टर फिर. तो उसको रजिस्टर करा दिया. So I was a novice. I registered one novice. Nice. तो दोनों मिलके on 2nd of January Mm. 2017 Mm. we ran inside the Victoria Memorial. 1.6 kilometer we ran, and after that we were like जब Mm-hmm. जीप बाहर आ गया बॉडी से पूरा धुआं निकल रहा है. we were like यार 1.6 किलोमीटर में ये हाल है 21 तो बहुत है यार कैसे करेंगे. बोला चल एक काम करते 8th of January एक Mm-hmm. इवेंट है उसमें जाते हैं. वो Mm-hmm. 5 किलोमीटर का रेस है उसमें रजिस्टर कर लिया. तो वी वेंट इनटू दैट इवेंट. उसमें Mm. 5 किलोमीटर 28 मिनट में हम लोग कर लिए.
एवरीवन इज सेइंग हाँ बहुत अच्छा है भाई, इन 5 किलोमीटर 28 मिनट्स, वेरी गुड वेरी गुड वेरी Wow. नाइस। हाँ 21 किलोमीटर, हाँ हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। अब कैसे होगा किसी को नहीं पता, Mm-hmm. हम लोग इतना नॉविस है, उनको तो पता नहीं। तो 1 किलोमीटर 2 किलोमीटर प्रैक्टिस करते थे और सोचते थे बहुत हो गया, ऑफिस Mm-hmm. चले जाते थे। तो लाइक दैट वी प्रैक्टिस। इट वाज लेस प्रैक्टिस, इट वाज Mm-hmm. अंडर प्रैक्टिस। कहीं से तो भी पता चला, कहीं से तो भी पता चला, कुछ पेसर वगैरह रहते हैं, तो आई Mm-hmm. वाज गेटिंग, आई वाज इन टच विद द ऑर्गेनाइजर्स एंड एवरीवन इन सोशल मीडिया, इन फेसबुक। तो वहां पे पता चला कि रेस से एक हफ्ता पहले अराउंड 14-15 किलोमीटर Mm-hmm. एक करना होता है प्रैक्टिस। तो वो मेरे को पता चला। तो आई डिड, आई वाज अबाउट टू डू Okay. 14-15 किलोमीटर इन द क्या बोलते हैं इसको, एक एक हफ्ता पहले, ऑन सैटरडे और संडे। हाँ, तो ऑन दैट डे मेरा जो हार्ट का प्रॉब्लम Mm-hmm. है, एसबीटी, Mm-hmm. सुप्रावेंट्रिकुलर टेकिकार्डिया, हार्ट बीट जो बढ़ जाता है, तो दैट हैपेंड एंड आई कुडंट कंट्रोल इट। कोई तो भी सिचुएशन बाहर था, बिकॉज ऑफ दैट मे बी, तो मैं उसको कंट्रोल नहीं कर पाया, मैं घर आया। तो माय वाइफ नीता, ही वाज फ्यूरियस, वो बोलते क्या जरूरत है ये सब करने का, अच्छा खासा जिंदगी चल रहा था, क्या 21 किलोमीटर क्या दौड़ना है, कहाँ उसमें देखो हाल ऐसा हो रहा है, क्यों लेना है रिस्क, छोड़ो इसको। तो मन Right. में तो मैं सोच रहा था कि एक बार डिसीजन ले लिया तो छोड़ना तो है नहीं, लेकिन मैं बोला कि नहीं ओके कोई बात नहीं, अगर जाएंगे नहीं होगा तो छोड़ देंगे। बट आई रियलाइज, आई न्यू कि मैं छोड़ने वाला तो हूँ नहीं। Mm. हाँ मतलब अगर जान रहा, जिंदगी रहा, तो जितना भी हो गया, लुढ़क जाऊं गिर जाऊं, खत्म तो करूंगा। हाँ ये मेरे मन Mm. में था कि कुछ भी हो जाए मैं खत्म करूंगा, 21 किलोमीटर मेरे को खत्म करना है, ये एक जुनून मेरे दिल में बैठ गया था। एंड समहाउ जो पेसर जो थे, वो दे हेल्प अस सो मच, मेरे को तो बहुत हेल्प किया। दे मोटिवेटेड, they were actually, one lady Mm. was there, Prema Ramarajan, she is a very good friend of mine now. So she encouraged me a lot, Okay. running करते करते she was Mm-hmm. talking so much, she is a journalist। हाँ वो रनिंग करते करते दौड़ रही, और मैं दौड़ते टाइम बात करना तो दूर की बात है, मैं खुद हाँप रहा हूँ उसके स्पीड पेस में दौड़ने में। एंड शी वाज कंटिन्यूअसली टॉकिंग, मैं उनको Mm. यही पूछा बात कैसे कर रहे हो, आई वॉज लाइक आउट ऑफ ब्रेथ। हाँ दौड़ते दौड़ते बोला हो जाता है हो जाता है, तो ये सब प्रैक्टिस से हो जाता है, तो यू विल Yeah. ऑल्सो डू ऑल दिस थिंग इन कमिंग ईयर, तो डोंट वरी। हाँ अभी नहीं बात कर पा रहे हो, कोई दिक्कत नहीं Mm. है, रन जस्ट रन, पेस रखो, रन करो, वो टेक्निक सब बता रहे थे। तो शी हेल्प मी अलॉट, somehow I could complete the 21 kilometer run। और उसके बाद एक पागलपंती बैठ गया, नेक्स्ट Mm-hmm. हफ्ते ही और एक रन था, वो कंप्लीट किया 10 किलोमीटर। उसके बाद एक एक करके सब इवेंट्स, बैंगलोर समवेयर समवेयर, मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, हर एक जगह जा जाके, फ्राइडेज को ऑफिस करता था, सैटरडे अर्ली मॉर्निंग फ्लाइट लेके चला जाता था वहां पे, सैटरडे बिट कलेक्शन करके, कभी भी सैटरडे को, हाँ लेट नाइट तो होता ही है, फ्रेंड्स लोग है इधर उधर करके, Mm. फिर संडे सुबह उठ के संडे मैराथन करके, फिर संडे नाइट वापस आता था, या मंडे मॉर्निंग आके मंडे में ऑफिस ज्वाइन कर जाता था 11 बजे मीटिंग में। लोग बोलते फ्राइडे नाइट देखा 6:30 बजे मीटिंग कर रहा है तू ऑफिस में, मंडे देख रहा हूँ 11 बजे मीटिंग कर रहा है, और संडे फेसबुक में देख रहा हूँ तू हैदराबाद में दौड़ लिया 21 किलोमीटर, तो हाउ दिस इज पॉसिबल, हाँ ये कैसे कर लेते हो। आई सेड आई कैन Mm. गिव इन अ राइट अप। तो एचआर बहुत खुश हो गए, एचआर बोले हाँ हाँ दे दो दे दो। तो वो लिख के मैं पूरा दिया मेरा स्टोरी, वो अपने जो जर्नल है अपना, जो इसमें है वेबसाइट है, उसमें सब पोस्ट कर दिया। वहां से पूरा ऑफिस जान गया कि अरे वाह ये तो बहुत अच्छा है, Mm. ये तो ऐसा करता है। तो स्लोली स्लोली, तो ये सब जो क्या बोलते हैं एक्कोलेट्स एंड ऑल देयर, इट स्टार्टेड कमिंग अप। तो ये होते होते जिस दिन 21 किलोमीटर कंप्लीट किया था, द डे वी कंप्लीटेड Mm-hmm. 21 किलोमीटर, दैट डे वी डिसाइडेड टू डू 42 किलोमीटर इन द नेक्स्ट इवेंट, इन द नेक्स्ट ईयर, मी एंड माई फ्रेंड। तो दोनों ने ये डिसाइड किया, एंड वी कुड Oh. कंप्लीट, हम लोगों ने Oh. कंप्लीट भी किया नेक्स्ट वीक में। बहुत तकलीफ आया, बहुत कुछ हुआ, उतना डिटेल में नहीं जा रहा हूँ अभी, जो असली स्टोरी है उस पर आ रहा हूँ।
तो 42 कंप्लीट कर लिया कैसे तो भी। उसके बाद एक लीजेंड, एक मेंटर, मेरा जो मेंटर है वो लीजेंड, उनसे मैं मिला, जयदेव राजा। हाँ, ही Mm. फेमसली नोन एज जे ब्रो, सब लोग रनिंग कम्युनिटी में। तो ही इज द रनिंग गॉड यू कैन से Okay. ऑफ कोलकाता, कोलकाता रनिंग कम्युनिटी। तो उनसे मिला। तो ही डिड Mm. 100 miles of run, कैन यू इमेजिन, 160 kilometer of running he did। मैं तो पहले देखा, मैं पता, ही लुक्स लाइक अ ह्यूमन बीइंग, बट मे बी Wow. ही इज नॉट अ ह्यूमन बीइंग, मे बी ही इज एलियन। हाँ, Mm. सुपर ह्यूमन और एलियन होगा कोई तो भी। Not a human being, 160 superhuman. किलोमीटर इज आउट ऑफ माई माइंड। मैं जिंदगी में सोचा नहीं था मैं बोला 160 किलोमीटर गाड़ी लेके लोग Yeah. जाते, बोलते हैं कि थक जाएंगे, इतना नहीं करेंगे, और ही डिड 160 किलोमीटर Mm. इन 33 hours। तो हम लोग जहाँ पे प्रैक्टिस करते थे, तो Wow. ही हैड अ सेशन, उसमें ही Mm-hmm. टोल्ड द रियल स्टोरी, उनका स्टोरी पूरा बताया। इट वाज सुपर सुपर इंस्पायरिंग। तो डायरेक्ट उनसे बात किया। हाँ, Mm-hmm. तो बात करके वो बोले कि आ जाओ कभी भी आ जाओ घर पे, बताता हूँ। तो 42 करके मैं चला गया उनके यहाँ पे, जाके बोला कि जे ब्रो 42 कंप्लीट कर Mm. लिया। बोला हाँ हाँ 60 किलोमीटर करना है दिसंबर में। बोला हाँ तू कर लेगा कर लेगा। बोला थोड़ा स्टोरी है। बोला क्या बता। बोला ऐसा ऐसा है, मेरा हार्ट थोड़ा डिफेक्टिव है, मेरा Mm. पैर ऐसे टूटा हुआ है, ये है। तो उसने मेरे को ऐसे देखा, ऊपर से नीचे ऐसे देखा। उसके बाद बोला तू पागल है, तू ये स्टोरी बताया किसी को। मैं बोला नहीं। बोला ये सब लेके तूने 42 कर लिया। मैं बोला हाँ, उसमें क्या बड़ी बात है। मतलब तेरे को लगता है क्या Mm. बड़ी बात है, एक काम कर, तू स्टोरी को लिख और मेरे को भेज, जो भी है तेरा स्टोरी लिख के भेज। एंड ही वाज लाइक Mm. अ super connected with all the organizers of India, all the running organizers of India and Kolkata, and he gave my story to all the organizers। बस उसमें से मतलब तब आना चालू हो गया। देन आई वाज द एम्बेसडर ऑफ द आईडीबीआई फेडरल मैराथन, जिसमें मैंने किया फर्स्ट, मेरा जो इवेंट था आईडीबीआई फेडरल कोलकाता फुल मैराथन। तो उसमें Wow. आई वाज द एम्बेसडर। Mm. उसके बाद एयरटेल रन फॉर एजुकेशन जो Mm-hmm. इवेंट होता है, उसमें आई वाज द पेसर ऑफ 70 मिनट्स। उसके बाद TSK 25 के जो इवेंट होता है, इन दैट इवेंट Wow. माय प्रोफाइल गॉट सिलेक्टेड। एंड आई वाज, मेरे ऊपर उन्होंने पूरा एक वीडियो स्टोरी बनाया। आई वाज लाइव ऑन स्टार स्पोर्ट्स विद एमिनेंट स्पोर्ट्स कमेंटेटर गौतम विमानी, उनके Wow. साथ में स्टार स्पोर्ट्स पे लाइव। तो लाइव वाज Wow. मतलब लाइव के मतलब इन द क्लाउड नंबर 9। तब वो टाइम जो बीता था कि क्या हो रहा है मेरे साथ, जो भी हो रहा है सब एक Yeah. के बाद सब अच्छा अच्छा चीज आ रहा है। देन द रियल थिंग, ये दिसंबर 2018 की बात है। ऑन 2nd of December 2018 I successfully completed the 60 kilometer run। उसके बाद 16th of Mm-hmm. December I was live, जैसे मैंने बताया। उसके बाद इन 2nd of February 2019 I've been felicitated by the god of cricket सचिन तेंदुलकर मेरे को स्टेज पे बुला के, हाँ, जिनको क्वेश्चन करने Wow. के लिए लाखों लोग बैठे रहते हैं, लाखों रिपोर्टर्स बैठे रहते हैं, जस्ट टू आस्क वन क्वेश्चन, दैट पर्सन आस्क्ड मी हु इंस्पायर्ड यू, एंड आई सेड माय Yeah. सन Dinesh। He said wow, that's great। It was a three Wow. line conversation, but it's a power conversation। I cannot forget this in my entire life। तो ऐसा एक कन्वर्सेशन हुआ है। लाइक मतलब क्या हो रहा है ये समझ में नहीं आ रहा है, और कुछ मैं बोल भी नहीं पा रहा हूँ। सब ऐसे लगा, स्टेज पे बुला के प्राइज दिए, फिर और एक बार बुलाए, मैं उनके ही साइड में Mm. बैठा, सचिन तेंदुलकर द ग्रेट क्रिकेटर, द मास्टर ब्लास्टर, उनके साइड में जाके मैं फिर से बैठ गया। उनसे मैं बोल रहा हूँ कि देखो, लोगों को एक बार आपसे मिलने का मौका नहीं मिलता, मेरे को कुछ ही मिनटों में दोबारा मिलने का मौका मिल गया। तो वो मेरी तरफ देख रहे थे, हंस रहे, बोल रहे यस यस, हो गया। फिर मेरे को लगा वाह क्या हो गया, लाइफ में बहुत कुछ हो गया। उसके बाद फिर मेरे को बुला लिया, आप लोग जिनको अवार्ड मिला आप लोग आ जाओ आ जाओ। हाँ, सचिन तेंदुलकर ऊपर रूम में है। हाँ, तो आप लोगों का स्पेशल Mm. एक वहाँ पे इनविटेशन है, आप लोग
वहाँ पे जाओगे और आपका स्पेशल कुछ ये होगा। बोला, चलो अच्छा है और भी बढ़िया है। फिर चले गए वहाँ पे, जाके सेल्फी ले ली उन्होंने, Mhm. फिर सिग्नेचर वगैरह दिए। तो वाइल स्टैंडिंग इन द लाइन, एक लाइन, लंबा एक लाइन था, एक रूम था जिसके अंदर जो लोग सिलेक्टेड है उनको अंदर बुलाया गया, और बाहर 1,500-2,000 लोग होंगे जो लोग वेट कर रहे थे एक ग्लिम्स लेने के लिए सचिन तेंदुलकर का। तो ही गॉट दैट काइंड ऑफ ऑरा, Mhm. राइट। उसके बारे में भी, ऑरा के बारे में भी मैं बोलूंगा। तो हाँ, Yeah. तो वैसा सीन था। तो उसमें उन सबको हटा हटा के मेरे को और एक दो जन थे, उनको लेके अंदर वो रूम में घुसा के रूम बंद कर दिया। अंदर जाके देखा एक लंबा सा लाइन लगा हुआ है, और वो सचिन तेंदुलकर यहाँ पे ऐसे लिखे जा रहे, सिग्नेचर किए जा रहे, ले Mhm. रहे, एक जन करके ले जा रहे, फोटो खींच रहे जा रहे। इन फ्रंट ऑफ मी द ग्रेट अग्निमित्रा पॉल वॉज स्टैंडिंग। He's a she is a fashion designer, is a very famous fashion designer Okay. from Kolkata. तो मैं उनको देखा, Yeah. मैं बोला look at the or think about the magnanimity of the person, a celebrity like you standing with हाँ normal Mhm. people like us। हाँ, तो वो भी हंस दिए कि बोले यार क्या करें। तो ही Yeah. इज लाइक दैट ओनली, क्या करें, उनके लिए तो हमें भी लाइन में लगना पड़ता है। तो मैं बोला चलो ठीक है, आपके साथ भी एक Yeah. सेल्फी खींच लेते, उनके साथ भी सेल्फी खींच लिया। वो फोटो जो है उसमें Yeah. मेरा पोस्ट में मैं आपको लिंक शेयर करूंगा। तो पोस्ट में ये Wow. वो कमेंट भी है जो अग्निमित्र पॉल के Okay. साथ जो मैंने फोटो खींचा, वो ये स्टोरी भी मैं वहाँ पे डाला हुआ है कि ऐसा ऐसा सिचुएशन हो जाता है। तो उसके बाद तो और भी बहुत कुछ है, अच्छा. और क्या बोलूं। द मोस्टली मैं ये स्टोरी इसलिए बताया टू मेक यू पीपल अंडरस्टैंड Mhm. कि एवरीथिंग इज इन आवर माइंड। हमारा माइंड ही हमारा पूरा सब कुछ करता है। सो वट एवर Yeah. फिजिकल और एनी अदर चैलेंजेस वी हैव, सो दैट कैन बी ओवरकम विथ आवर माइंड पावर। और ये सब मेरे लिए हुआ, ये सब मेरे लिए पॉसिबल हुआ। वो मैं बाद Mm. में रियलाइज किया। इन द मंथ ऑफ जुलाई आई डिड अ न्यूरो साइंस कोर्स, एक न्यूरो साइंस कोर्स मैंने किया। तो आई एम गवर्नमेंट ऑफ Okay. सर्टिफाइड न्यूरो साइंस ट्रेनर। तो वो कोर्स करके उसका जो इम्प्लीमेंटेशन है वो सबसे पहले मैंने Mhm. मेरे पे किया। So whatever happened after that, it is the result of all that Okay. activities, all that you can Mhm. say, all that whatever I did with myself on Right. that time, it was the result of that. तो उसके बाद मुझे एक चीज समझ में आया, so I have something what I can give to the society, give to the people. So something special is there with me. I can share that. और भी बहुत Yeah. कुछ हुआ, लंबा स्टोरी तो इतना लंबा हो जाएगा 2-3 घंटा। जैसे मैंने बताया जो स्टॉक में Mhm. 8 मिनट मेरे को दिया था, मैं बोला 8 घंटा मेरे लिए कम पड़ेगा, आप 8 मिनट बता रहे हो। हाँ, वो बोले कुछ नहीं कर सकते। तो आई कैन अंडरस्टैंड योर ऑडियंस, एंड पीपल ऑल्सो हैव वेरी लेस टाइम बिकॉज दे आर बिजी विथ सो मेनी थिंग। वी आर थैंकफुल कि Yeah. लोग हमें सुन रहे हैं, लोग हमें बहुत क्या बोलते हैं, बहुत Mhm. इंटरेस्टिंगली हमें सुन रहे हैं। तो इसको इस तरीके से कंटिन्यू करते हैं, हाउ माई नॉलेज कैन बेनिफिट देम। आप अगर सुन रहे हो, आप अगर ये पूरा चीज सुन रहे हो, तो मेरे को सिर्फ मेरे बारे में नहीं बोलना है, नॉट टू एग्जैजुरेट माई स्टोरी, नॉट टू मतलब मेरा फेम Mhm. हो, मेरा हो, इसके लिए नहीं, बट Yeah. टू मेक यू अंडरस्टैंड कि ये जो जो भी चीज मैंने किया आफ्टर आफ्टर फेसिंग सो मच ऑफ चैलेंजेस इन माई लाइफ, जो ये सब चीज मैं जो कंप्लीट कर पाया, ये सब जो एक्यूलेट्स Yeah. मेरे को मिला, सो देयर इज समथिंग, सम स्पार्क वाज देयर। तो उसको कैसे हासिल करना है अपने लाइफ में, तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ लाइफ ब्यूटीफायर, लाइफ ब्यूटीफाइंग और ब्यूटीफाइंग लाइफ। तो ये चीज को मैं पहले लाइफ ऑप्टिमाइजेशन बोलता था, Yeah. बिकॉज 2014 में आई वॉज इन अ कंपनी, उसमें मैं Mhm. ऑप्टिमाइजेशन एक प्रोजेक्ट में काम किया। जो ये होता है, जो क्या बोलते हैं, स्टैटिस्टिक्स का जो Mhm. एक ये होता है, एलएलपी होता है। तो उसमें ऑप्टिमाइजेशन ये मैंने Okay. सीखा। ये सीख के मेरे को एक चीज समझ में आया Okay. कि
हमारे लाइफ में भी हम लोग ऑप्टिमाइजेशन कर सकते हैं। तो मैंने मेरे लाइफ में काफी सारा ऑप्टिमाइजेशन किया, बट मेरे को एक फ्रेंड ने बताया कि यार ये तुम ऑप्टिमाइजेशन बोलता है, इट्स टू टेक्निकल, इसमें मजा नहीं आता है, और इसको थोड़ा सा मजेदार बना, इसको बोल के Yeah. ब्यूटीफाई लाइफ या लाइफ Mm. ब्यूटीफाई। तो उससे मैंने इस चीज को, लाइफ ब्यूटिफिकेशन को मैंने लिया। तो आई एम थैंकफुल टू दैट पर्सन ऑल्सो कि उन्होंने इतना अच्छा सजेशन दिया। तो Mm. ब्यूटीफाइंग लाइफ में जिसको भी बोलता हूँ तो पीपल गेट इंटरेस्टेड, उनको इंटरेस्ट आता है, बोलते हैं क्या ब्यूटीफाइंग लाइफ, ऐसा तो सुना नहीं कभी, ये क्या चीज होता है। तो मैं यही चीज मोटा मोटी में समझाता हूँ कि वी हैव 5 एस्पेक्ट्स ऑफ लाइफ, राइट। हमारा हेल्थ है, हमारा माइंड है, हमारा करियर है, या हमारा जो Mhm. भी है, हमारा काम जो है, वी हैव वेल्थ एंड वी हैव स्पिरिचुअलिटी। ये 5 मेजर एस्पेक्ट्स होता है लाइफ में। तो हम कैसे हमारे जो भी 5 एस्पेक्ट्स है उसको एवरीडे बेसिस पे कैसे फाइन ट्यून करें, तो दैट इज द कंसेप्ट ऑफ लाइफ ब्यूटिफाइंग। तो whoever is listening, Mm. if you're interested to make your life beautiful, so you can get connected with me, you can get connected with Dr. Jui, she can connect with me. So whatever is comfortable for you, so Yes. be comfortable. एंड मैं एक चीज समझता हूँ, ऑलवेज बी कंफर्टेबल विद द अनकंफर्टेबल सिचुएशन। तो मैं कभी कंफर्ट में रहता नहीं हूँ। Yes. मैं I मैं मेरे लाइफ को I learned इतना that अनकंफर्टेबल big बनाया time. कि मेरे आजू बाजू में जितने लोग हैं, हाँ, मेरे फैमिली मेंबर्स, दे गॉट सो मच, मतलब उनको इतना परेशानी होता है, बट उनको मैं एक ही चीज बोलता हूँ कि या आई Mhm. रेस्पेक्ट यू ऑल। आप लोगों का ये जो अंडरस्टैंडिंग है, अभी तक मेरे को झेलते हैं, वो ये घर पे जो देख रहे हो वो घर पे रहने देते हैं, आफ्टर सो मच ऑफ पागलपंती, आफ्टर सो मच ऑफ एक्टिविटीज लाइक के जिसको घर पे भगा देना ही ठीक रहता। तो ये है। तो अनकंफर्टेबल तो मैं अपने आप को बहुत Mm. सारा करता हूँ, और करेंटली आई एम इनटू सो मेनी थिंग कि मैं थोड़ा मतलब माफी चाहता हूँ कि पूरा मैं याद करके बोल नहीं पाता, बट Mhm. स्टिल आई ट्राई टू give Okay. introduction in a very short, that I am on a mission to help 100,000 people to transform their life, and I'm also on a mission to make this planet a better place for living Mhm. for all. तो ये चीज इसलिए सोचा, इसलिए मैं इस चीज को करना चाहता हूँ कि Mm. आई कुड अंडरस्टैंड कि हम लोग, जब से मैं मतलब जॉब में था, अभी मैं जॉब में नहीं हूँ, लास्ट 4 years आई मीन टू अदर थिंग्स, आई मीन टू फ्रीलांसिंग, आई मीन टू अदर बिजनेसेस। तो मैं एक चीज समझा, जब मैं जॉब करता था, आई वॉज Okay. आईटी एम्प्लॉय, मीडियोकर आईटी एम्प्लॉय। मैं कभी भी, तब ऐसा नहीं कि मैं बहुत स्टार परफॉर्मर, मैं कभी नहीं था। मैं को बहुत मैनेजर्स का बहुत गाली मेरे को सुनना पड़ता था, बिकॉज आई एम Mm. नॉट इन टू जॉब मेंटालिटी। मेरा जॉब मेंटालिटी मेरा है ही नहीं, किसी के अंडर में मैं काम करूं, ऐसा मेरा है ही नहीं। Okay. मेरा एकदम ऐसा नेचर है कि मेरे को मन करे मैं काम करूंगा, मेरे को मन करे मैं Mhm. नहीं करूंगा, तो इट इज अप टू मी। तो ऐसा, लेकिन वो कॉर्पोरेट, राइट, Mm. कॉर्पोरेट्स में ऐसा Yeah. चलता नहीं है, कॉर्पोरेट्स में Boss सुन of के your own चलना life. पड़ता है, तो कन्फ्लिक्ट क्रिएट होता है। तो इसलिए तो कन्फ्लिक्ट काफी सारा क्रिएट हुआ था, जो भी कंपनी में गया उसी कंपनी में ऐसा दिक्कतें हुआ, बट फ्यू पीपल आर देयर Mhm. दोज हु कुड Mm. अंडरस्टैंड द पोटेंशियल। उनको लगता था कि यार इसमें है कुछ पोटेंशियल है, ये पोटेंशियल दिखाता नहीं है, पोटेंशियल को इम्प्लीमेंट करता नहीं है काम में, बट ही गॉट सम पोटेंशियल। ऐसा बहुत सारे लोग मेरे से Mm. अभी भी कनेक्टेड हैं, जो मेरे साथ कॉर्पोरेट्स में थे। तो वो मेरे को बहुत पहले से ही बोलते थे, यार तू बहुत कुछ करेगा, ये हमें पता लग, ये मेरे को Mhm. लगता है कि तू बहुत कुछ करेगा लाइफ में। हाँ, मैं बोला क्यों लगता है ऐसा, तो बोलते थे कि पता नहीं, लेकिन मेरे को लगता है कि तू यार बहुत कुछ करेगा, बहुत कुछ करेगा, तू तेरा ऐसे नॉर्मल सोच नहीं है, लगता बहुत है. अलग सोचता है। तो इसका भी एक अलग स्टोरी है। मैं मेरे Mm. फ्यूचर को मेरे आंखों के सामने देखा इन 2004। एक ऐसा इवेंट हुआ, ऐसा हादसा हुआ, मैं बैठा था, अचानक से मेरा पूरा जिंदगी मेरे Mm. आंखों के सामने से गया। तो उसमें मेरे को ये सब चीज दिखा
कि मेरा कुछ एक्सीडेंट होने वाला है, उसके बाद Mm. और एक मेजर एक्सीडेंट होने वाला है, उसके बाद बहुत कुछ अच्छा चीजें होने वाला है। तो इसलिए आई एम मतलब वेरी, यू कैन से, क्या बोलते हैं इसको, निर्भीक बोलते हैं बंगाली में, फियरलेस बोलते हैं इंग्लिश में, मतलब दबंग बोलते हैं हिंदी में। तो ऐसा Okay. लाइफ में लीड कर Okay. मेरे को कोई चीज का कुछ डर नहीं है, मैं कुछ अरे भी कर क्या सकता हूँ, बात है। कुछ भी जो मन करे वो मैं करता हूँ। एंड नाउ इट इज, मैं मतलब बहुत सारा टेक्निक में माइंड कंट्रोल से बोल सकते हैं, मेडिटेशन से बोल सकते हैं, बहुत सारा ऐसा टेक्निक मैंने मेरा ही इनोवेट कर लिया हूँ, जिससे आई एम कनेक्टेड विद द मदर अर्थ। तो उससे वाह। मेरे को बहुत बहुत मतलब ऐसा फील आ जाता है कि हम्म। तो आई एम टोटली इंटू 100% सरेंडर, उसमें मैं रहता हूँ। तो मेरे को कोई डाउट, मेरे को कोई चिंता नहीं है। तो आई नो मदर अर्थ, ये प्रकृति मेरे लिए कुछ हम्म। सोच के रखा है, और उन्होंने जो सोच के रखा है आई एम वेरी मच ओके विद दैट। तो वो जो करा रहे मैं वो कर रहा हूँ। तो दिस इज माई स्टोरी, वेरी शॉर्ट स्टोरी। कितना मिनट हुआ? हो गया, 40 मिनट हो गया स्टोरी। तो Yeah. No, it is worth listening क्योंकि you are not living life. The life is living through you. So you could understand this phase, I guess, because you are right, a chosen person right. on earth to I'm do very much, this, to be this kind of a person. There are a lot of people, yeah, they are like pretty much normally living, casually living, but right, they are not even right, aware of those things, what they're doing. They're just living. कि हाँ जॉब करना होता है, पैसे कमाने हैं, घर को प्रोवाइड करना है. right. But in between that, they're not listening to themselves. So I do feel that by Mother Earth, you are the chosen one. And she's telling you that this is the work, एक this is the एक लाइन purpose you एक have been लाइन given. याद आ गया, Just do it. सॉरी टू इंटरप्ट, कैसे भी कि करो, जैसे कि बोल रहा लेकिन है करो. कि जैसे जैसे कोई बोल रहा है, जा Okay. शुभाशीष जी ले अपनी जिंदगी। लाइक जा सिमरन जी ले अपनी जिंदगी। उसी तरह। जी ले अपनी जिंदगी को. Pretty much right. So, I do feel this because when I started meditation, I am into meditation ओके, journey from last, now I'm going to complete 2 years, and I am shocked with the results. I'll tell you ekdam short में about me because when you said mind is everything, and I was not a believer of this. I was like, you could say a gone case. मुझे कुछ भी समझ में नहीं आता था. What I used to feel like कि my parents have decided a life for me and I'm supposed to live in that way and I'm supposed to give the respect and be a good person, stand up on their expectations, be a person and just live. This is what it is. But when I grew up and I was not राइट, introduced to this power of Mother Earth getting connected and all of those things. But I just ओके, understood one thing. My mind is talking every time negative, हम्म, and the negative continued to happen. हम्म, And I used to cry on that. But the हम्म, one thing I know राइट। कि हो तो मेरी वजह इसको से मैं रहा है ना, बोलता हूँ, तो फिर मैं रो क्यों रही हूँ? इसको मैं बोलता So what हूँ, या happened इसको मैं when बोलता I हूँ, was, आसमान का दुख hmm को लेके what do आना। you say to this? आसमान के दुख को पकड़ के खींच के लेके आ जाना। So I was such a silly girl. It was like um, 2012 when I joined to a dental college for my dentistry, and that point was I was not introduced to what is a job life and what is self-employment and employee difference. कुछ भी नहीं पता था. I wanted to become something else. I pictured myself, as you said, there is a vision coming in front of you. I used to see that dreams over and over and over again. But I ignored them just because people around me, situations around me told me that there is a system and human is supposed to live in a way. So
You have to talk in this way. You have to walk in this way. You have to present yourself in this way. I had these questions in my mind, but I didn't get anyone to answer me. Like, बताओ कुछ. ऐसा क्यों है? ऐसे humans को क्यों रहना पड़ता है? Specific क्यों है सब कुछ? What if मेरे को ये सब नहीं करना? तो क्या कर सकते हैं? But I never spoke up because I was told बात नहीं करते ज्यादा, आवाज नहीं बढ़ाते. ठीक है. जो डाउट्स है वो स्कूल में टीचर्स को पूछते हैं, हमारा दिमाग मत खराब करो. तो आई स्टॉप्ड माई सेल्फ. बट यू नो एट द एज ऑफ 25 something really dark happened to me, and I was like, I need to find myself again. I don't want to go in that old person that I was. I was lazy. I was not able to wake up in the mornings, and I have never seen a sunrise. I was such lazy, so busy. But when something dark happens to you, something painful happens to you, there is a reason behind it, and that is going to change you completely. In Right. that case, you have no choice. And in that case, Mother Earth tells you, choose this path, not that one. There is a gut feeling. There is intuitions also happening to humans now and then, certain happenings, and your awareness is telling you, ये सही नहीं है, वो सही है, ये करो, यहाँ कुछ ना कुछ तो मिल ही जाएगा. Mm. So I found meditation thing and I started doing it. So when I was doing it, I was completely disturbed because meditation का मतलब जो होता है वहां तक मैं पहुंची ही नहीं थी. I was all the time thinking about thoughts. So I went a little deeper and I find that कि you don't have to be what your mind wants you to be. You have to realize first. Is it like Right. see, the thing is, it's not Exactly. I am that I am right now. There is something inside me who speak up. When I have nothing going on, there is something inside me, someone who keeps telling me, ये ऐसा होता है, Exactly. ये ऐसा होता है. Who is that person, first of all? Uh, Why that person is coming out of me and saying those things? Because I am not putting my brain in that. I am not saying that कि ये एक्टिविटी मेरे को करने का मन हो रहा है. जब तक मैं बोलूँ नहीं तब तक दिमाग को कमांड कहाँ से जाएगी? तो मैंने बोला ही नहीं, ये आ कहाँ से रहा है? That I found through meditative state. And I was like, finally I have reached to the point where I understand what is meditation. Meditation is actually this. Thoughts go by, appreciate them, think about it a little bit, and then when it goes, just let it go. Let the other thought comes. It's not like empty mind all the time. And that's how I started to control my brain, tell my brain. right. The brain was not controlling me now. I was controlling the brain. So as you said, power of mind is it is like it's completely magical. I felt like I am a superhuman. How could a girl like me, who used to cry on small things, who used to feel bad about a little thing happened to me, suddenly she is so empowering and suddenly she is so strong and encouraging. और मुझे Yes. किसी की जरूरत ही नहीं है ये सब करने के लिए, मैं खुद ही कर पा रही हूँ. Okay. So my dream was I wanted to come on TV. Mm. I wanted to do this that I am doing right now. Have a screen and be in front of it and live the Exactly. way I want to be. Exactly. People will love it anyway. I had that in my head somewhere. So when I was in meditative state, again that person in me said, go back to your dreams now. Forget all of those things. These are going to help you some or the other way, but go back to your dreams. So I went in my dream line again. I was daydreaming, the same thing. I used to see the people like that, same thing that I used to do when I was a kid. And I was so happy that mind is doing everything. मैंने कुछ भी नहीं किया है. It happened through my mind. So I do get that feeling that you are feeling right now, not in the same way, but I feel the power of my mind. So when you have to choose what is going to affect you, what is not going to affect you, it is in your hands. And
if you stable your mind, if you tell your mind that I don't want to go in a negative side, I want to be on a positive side. So Exactly. mind will always talk about positive things. Upside down. So my life turned upside down. I I said, Exactly. see, I'll tell you, like manifestations are real, right? Exactly. Manifestations are मैं completely मैं इसको real. बोलता हूँ मैंने तो भाई वैक्यूम देख क्रिएट लिया करना. है लिटरली देख लिया है what I do exactly what वाह I दैट do इज nowadays. नाइस तो आई हैव कोई भी चीज क्रिएटेड आई होता है गेस ना, उसको अगर मेरे को वो लाइफ में चाहिए तो आई क्रिएट अ वैक्यूम. वैक्यूम मीन्स उसको ऐसे क्रिएट करो कि वो खींचा चला आएगा मेरे पास. एंड दैट इज हैपनिंग. या तो आई एम वेरी मच ओके विथ इट. अच्छा या ये चाहिए. हाँ, आई कैन क्रिएट अ वैक्यूम. आई कैन क्रिएट अ वैक्यूम. मैं वैक्यूम बहुत सारा क्रिएट आ करके रख जाएगा दिया. हाँ, मिल वो सब अपने जाएगा टाइम में आ जाएगा. बस कुछ खुश हो. मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं वेरी है. ट्रू या श्योर. I'll tell you few moments. The thing is, I have written it in my diary. My diary is full of that. I have written what I'll say. I'll tell you what I have written. That I have a talk show. I just wrote it randomly in my diary. I have a talk show. I have bunch of good followers in the way beginning, and it is very easy for me to find guests for my show. Then I have a team for myself of the show. Then I said, I'll have an iPhone, the latest iPhone with me because I'm a content creator. I'm going to have that one day very soon. And then I'm going to have this a life where the entertainment industry or entertainment people would just come and connect me through whatever I do. And I'm ग्रेट. going to get an award. I said all of those things. I wrote it in a page, on a page, and I forgot that. I wrote it and I forgot it. I kept on going in my process. I started to, uh, send invites to random people. So there was this one guy who said like, I will help you with the website. I will help you with everything. And I was like, okay. But that guy wasted my 3 months of time. That wasn't like, what is that? Trustworthy person. I felt like, okay, fine, you are not supposed to do it. I'll get somebody else. I'll have a team one day because I know that I have written somewhere I have a team. It is going to come. Through that guy only I got one number and I found to know that that sole person has his own team and he's ready to take up my show. And ग्रेट. within a week or two, I have my team. राइट. And I was like, राइट. राइट. wow, that is nice. Yeah, this is happening. Then I said, I have good guests. I am getting good people's, request and approach. I used to keep saying that, and I also write it on the paper. Started happening. Today, what I do is I am not sending anybody request. I'm getting request on my show that, ma'am, is it a राइट. good platform? May I come and, share my journey? And I feel so good. Like this is all my, thought in the process that yeah, it is going to happen, it is happening, and I will do it. Some or the other way in time, it is already done. I just have to put my 100% right now. I manifested my ग्रेट. iPhone व्हेन इट 14 इज. Pro Max on my birthday. It was on सेलिब्रेट. 4th of January. So I ग्रेट. got it recently. And what I did is, yeah, what I did is I said that I took up a job. See, the thing is, I also, just like you, I'm not a person who thinks of a job. I don't want to be a job person because I was already in a corporate company and I hated that environment and I was triggered all the time. So I left it. I started my show and I was like, जो होगा देखा जाएगा, देख लेंगे, क्या बोलेंगे, जाने दो. बट मेरे को अपने हिसाब से जीने का है, ग्रेट. मेरे को किसी और के ग्रेट. ऑर्डर नहीं सुनने का है, मैं खुद को ऑर्डर दूंगी. तो आई डिसाइडेड आई डिड इट. तो मेरे को जॉब क्यों चाहिए थी? क्योंकि मुझे उस पैसे से आईफोन खरीदना था. और मुझे घर पे इतनी महंगी चीज पूछने के लिए अच्छा नहीं लग रहा था. आई वाज लाइक, आई एम अ ग्रोन अप पर्सन यार, मेरे को खुद को कुछ तो कमाना चाहिए ना अभी. बिकॉज आई लेफ्ट माई जॉब, आई वॉज नॉट हैप्पी. और स्टार्टअप को बहुत टाइम लगता है. सो इट वॉज टेकिंग इट्स ओन टाइम एंड आई हैड नो गुड फोन.
तो यार करूँ क्या? I took up a job in my hand. That job was also not giving me any money at the beginning because that was their startup. But I was like, okay, fine, कभी ना कभी तो होगा ना, थोड़ा थोड़ा धीरे धीरे एडजस्ट कर Wow, लेंगे, क्या फर्क पड़ता है? great. So I have this OnePlus. Okay, that was like normal phone because I was doing my content creation through that. But there was no good voice. Suddenly इसमें लाइव फीचर में हेडफोन्स लगते नहीं है, आवाज नहीं आती, फोन्स ने अपने नखरे दिखाना शुरू कर दिया. And I was like, what will I do now? I was so tensed. मैंने कहीं ना कहीं से एडजस्ट किया, पुराना फोन निकाला, उसमें किया, इसको भी हेल्प किया, सब किया. एंड एक दिन मेरे को ऐसे ही पापा पूछ लेते हैं कि कौन सा चाहिए. Wow, great. कब लेके दूं? लाइक आई एम एडजस्टिंग, आई हैव दिस. Like, no, I want you Great. to get it because you're a content creator and you should have it. And I was like, that is nice. Give me iPhone 14 Pro Max on my birthday. He's like, okay, I'll gift you that. Oh, And wow, that is the way I great. manifested this first award in my life. This is my first award. I was in tears when I got a message from a girl. She was on my show. She said, like, I do feel that you are going to win an award. We organize it. I call you dearly. Wow, Please come. And I was called to Hyderabad. wow, I went to great. receive this amazing award to Hyderabad. So this is a power of There are mind. one, You just have to two, create, yeah, as you said, vacuum. three inside this one, four, Wow, five, six, congratulations. so many. There are so I many. never There are so manifested many. all this. I don't know what Yeah. I manifested, but these are the accolades. These are the byproducts of what I Mm-hmm. manifested. तो ये भी एक तरीका है Mm-hmm. मैनिफेस्ट समथिंग. Yeah. हाँ, एक इंसान को बोला गया था कि आप Mm-hmm. मतलब क्या चाहते हो लाइफ में, क्या चाहते हो. बोला मैं बस कुछ नहीं चाहता हूँ, मैं चाहता हूँ कि Mm-hmm. बस मेरे बुढ़ापे में, जब मेरा उम्र हो जाए, मैं सोने के थाली में मेरे पोता Mm-hmm. पोती के साथ खाना खाना चाहता हूँ बस. एक छोटे से लाइन में उसने सोने का थाली भी मांग लिया, मतलब वेल टू डू. पोता पोती भी मांग लिया, मतलब बच्चे भी हैं, बच्चे के बच्चे भी हैं, मतलब उतना Yeah. उम्र तक वो जिंदा रहेंगे. तो दिस इज द काइंड ऑफ Mm-hmm. मैनिफेस्टेशन दैट यू कैन डू, राइट. इफ यू Mm-hmm. मैनिफेस्ट समथिंग कि जिसका बाई प्रोडक्ट बहुत Yeah. सारा अवार्ड, बहुत सारा एक्कोलेट्स, बहुत सारा टॉक शो, बहुत कुछ अगर है, तो यू मैनिफेस्टेड इन वन. और एक छोटा सा चीज मांगने में बहुत आसानी होता है. आसानी से हम लोग एक चीज मांग, मतलब ज्यादा कुछ नहीं, बस एक सोच लो कि कुछ. That is a basic, you राइट. have to be generous to ask something. So अगर तुम सिर्फ पैसा 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 मांगोगे, बड़ा ये राइट, चाहिए these वो are चाहिए, it all is not going बाई to come प्रोडक्ट. like that. You have to work for it. I mean, you worked for your, yeah, the byproducts. I would also call it a byproduct. काम नहीं एग्जैक्टली, करोगे, घर बैठे एग्जैक्टली. मांगोगे तो कहाँ से आएगा यार? कहाँ से आएगा? Even today also I'm राइट, struggling. Everybody needs money to survive on Earth. Mother Earth never एग्जैक्टली. तो said that you need money to एग्जैक्टली ये survive चीज here. पे जब बात But हमने करेंगे, ये चीज यू विल बनाई अंडरस्टैंड कि and दिस इज अ we are, मैन मेड yeah, सिस्टम. नाउ if we talk about the system what yeah. mother earth created, उससे आपको एक चीज Hmm, समझ में आएगा कि that system is hmm, totally different from the system in which we are living in. So that is the concept of yeah, natural living. We have created, I am connected with all over India, yeah. all over the world. The same thing is happening nowadays, and this is called Hmm, micronation, the community build up, the community building, right? So I am into it, yeah, and yeah. tomorrow or day after tomorrow I'll be leaving for Jharkhand, and on the way I'll meet so many people, and I'll go to Wow. Jharkhand, and there again
we have to do the community build up kind of work. So many work are there. So I'm into totally into it because काफी सारा चीज है. I'll take it offline with you sometime because there are Mm. there are some risks telling it in Yes. social media. I'm upfront telling you there are some risks. Yeah. Not right, Yeah. Yes, yes, I know this. Even right, I, right. I I told understand. very materialistic stuff to you. कुछ दो तीन because it disturbs Right, the right, let not right. be on the media right now. But I know it's it has too much of power, Right, and I know right. that I would love to tell all the humans out there. It's Everything. ऐसा नहीं है You कि have कुछ नहीं होता है, power. सब कुछ हो सकता है. Exactly. Just You have all the yeah, power just inside put your you. mind You to just it. have Yeah. to open it up. आपको ऐसे 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 Mm, ओपन कर करके वो yeah. पावर के अंदर जाना है. जितना धीरे 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 आप Yeah. जाओगे अंदर उतना आपको समझ में आएगा हाउ मतलब पावरफुल इट इज. धीरे 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 Hmm. धीरे समझ में आता है. और पावर एकदम से आता नहीं है. धीरे 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 वो पावर आ जाता Yes. है. तो धीरे धीरे जब आने लगता है आपको मजा आने लगता है. वाओ सो मच ऑफ पावर. वाओ सो मच ऑफ थिंग. वाओ सो मच ऑफ थिंग दैट वी कैन डू विद दिस. तो और करते हैं और करते हैं तो और मिलता रहता है. इट इज लाइक दैट. Yeah. तो ये भी चीज मैं Hmm. आपको बताता हूँ. या प्लीज. So just like as you said, like Mother Earth has a different system. And there is a mission that you are having right now. That is an ultimate mission, I guess, that you want to create a better Earth for people, like for all humans. I am very sorry to say, like, we humans have taken almost all the resources that Earth has provided us. So जैसे पहले ग्लोब हमारा दिखता था वैसे अभी नहीं दिखता है. पहले ग्रीन भी था उसमें कलर. अभी हम लोग जब दूर से देखते हैं तो ब्लू और व्हाइट ज्यादा दिखता है. ब्लू व्हाइट ग्रीन का कॉम्बिनेशन होता था थोड़ा सा ब्राउन द स्टोन का और ये सब. बट नाउ इट इज लुकिंग नॉट दैट. एंड आई डोंट फील लाइक मदर अर्थ इज हैप्पी with whatever we have done. But राइट. there is time that we can heal her, you know. We can help through each other and create a great environment for, if you really want to live here, you have to have, give something एग्जैक्टली. because earth is giving you something. तो तुमको भी कुछ देना पड़ेगा. Otherwise सिर्फ लेने से कैसे होगा ना. आई मीन वो तो सब खत्म हो जाएगा एक दिन. और आगे वाले जो लोग आएंगे, जनरेशन आगे बढ़ने वाली है, दे आर गोइंग टू बी लाइक राइट. सफरिंग. नो, व्हाई यू हैव टू सर्वाइव, यू हैव टू लिव. तो जब जीना है तो फिर सर्वाइवल रेट की तरफ जाने से बेटर लेट्स क्रिएट अ लिविंग एनवायरनमेंट. सो I would say this, that whatever mission you have, whatever steps you take, whatever initiatives you take थैंक under यू. this topic, our show is there with you. Okay, I am with you. I will spread this word to all of my guests, to all of my audience. And जिससे हो सकता है वो करे. मैं जबरदस्ती भी नहीं करूंगी. जिससे वो जैसा हो सकता है वैसे करे. And just, the feeling of this, like you need to save Earth, you need to help Earth, and you need to help other humans to survive here, to live here. It is a very big thought. थैंक यू. So I really appreciate your guts that you're taking such a big task in your hand, and I'm sure like kabhi na तो kabhi मैं बस kahin na थोड़ा सा. kahin se it is going to be a huge project राइट, राइट. where तो ये तो you are going to get मेरे को ये connected सब to a lot फीलिंग of people. आया है. पहले भी आया है और अभी भी आता है. बट एक बात मैं बताऊंगा. मेरा एक ट्रेनर ने मेरे को ये चीज सिखाया है. Mm-hmm. तो वो बोलते हैं कि आप अल्लाह, गॉड, जीसस, Mm-hmm. ऑलमाइटी, सुपर पावर जिसको भी मानते हो, जो भी आप बोलते हो, वो आपसे एक बात बोलता है. वो आपसे बोलता है तू करता वही है Mm-hmm. जो तू चाहता है, पर होता वही जो मैं चाहता हूँ. तू करता वही है जो तू चाहता है, पर होता वही जो मैं चाहता हूँ. Right. तो तू करना शुरू कर जो मैं चाहता हूँ, तो होगा वही Mm-hmm. जो तू चाहता है. सो सिंपल इट इज. Wow. हाँ. We are the kids of Mother Earth, na? हम लोग, we
have created a different lifestyle, which is not only harming Earth, which is also harming other humans also. But yeah, there are a few people just like you, gems like you, who is going to, bring a good change out there and also spread awareness about this in a very normal way. Like किसी को कुछ बोलने की जरूरत नहीं पड़ेगी. People are going to get turned towards your direction. Like where Subhashis is going, I will also go there. So तो that's how people are going to भी follow. उनका You are ही going to इच्छा lead है, them. ये उनका इच्छा होगा तो वैसे ही होगा। तो मेरे हाथ में तो कुछ नहीं है, वी आर जस्ट, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक Yes, यू। and congratulations तो on मेरे everything. को तो बहुत अच्छा लग रहा है, तो It was like it ओके। you do you know this? I had a questionnaire for you and I was just first. So I don't think so कि अभी questionnaire की कोई जरूरत है. We have already talked pretty much. So I always do this on my show that I tell the guests who have good experience of life, who have learned a lot from their own lives, to give a message to them. So, what message you तो would काफी give सारा to the मैसेज viewers तो out there, मैंने to छोटा all the छोटा youth करके and to all बिट्स the एंड humans पीसेस out में there? दिया, बट ओवरऑल ओवरऑल मैं एक मैसेज देना चाहता हूँ। स्वामी विवेकानंद जो एक बात बोल के गए हैं, हाँ, तो Mm, उनका एक कहना मैं हर रोज याद करता हूँ, mm, मानता भी हूँ। वो बोलते हैं कि आप अगर इस दुनिया में आए हो तो एक लकीर खींच के जाओ। तो बंगाली में जिसको बोलते हैं এই পৃথিবীতে এসেছো একটা আঁচড় কেটে যাও, mm, मीन्स एक दाग छोड़ के जाओ। तो इतना सा तो आप कर ही mm, सकते हो ना। इस दुनिया में आए हो, आप आए, खाए पिए, रिप्रोड्यूस किए, और कब चले गए लोगों को पता ही नहीं चला। फिर कुछ लोग याद करेंगे आपको, हाँ कोई तो था। तो इससे अच्छा यही है ना कि ऐसा कुछ काम करो कि आज से 50 साल, 100 साल बाद भी कोई तो बोले कि नहीं यार कोई एक आया था, या कोई कोई ये लोग आए थे, ये कुछ mm, तो किए थे। तो ऐसा कुछ करके जाना तो बहुत जरूरी है। तो mm, लेट्स mm. connect with everyone, each and everyone, and Right. create a system, create a place, create a community, so that people will remember us in the coming 100, 200, 300, 400, 600 years, Mm, कि हाँ यार कुछ कम्युनिटी बनाए थे तो उसके वजह से अभी भी हम लोगों को इतना इतना बेनिफिट्स आ रहे हैं, या वो कुछ भी किए थे, प्लांटेशन किए थे, या धरती को इस तरीके से सुंदर बनाए थे yeah. ताकि उसका इफेक्ट हमें अभी भी मिल रहा है। उसका गुड, उसका गुड Mm, जो भी है, उसका पॉजिटिव mm, हमें अभी भी मिल रहा है। तो वी mm. कैन live our life, larger than life like this। तो यू कैन कॉल इट लार्जर Yeah. देन लाइफ, बिकॉज लाइफ हमारा अगर जितना है Mm, 50, 60, 70, 80 years, वो तो हम लोग जिएंगे, चले जाएंगे। बट उसके बाद जो लाइफ जिया जाता है, जैसे आज भी मैं स्वामी mm, विवेकानंद को याद कर रहे हैं, कब से कब चले गए, mm, लेकिन जिंदगी मतलब पूरे हर दिन में कितने हजार, कितने लाखों लोग उनको रोज याद करते हैं, बिकॉज ही इज लिविंग हिज लाइफ टिल नाउ। अभी भी वो जी रहे हैं mm. थ्रू अस, हमारे थ्रू वो जी रहे, रोज जी रहे। सो Yes. लेजेंड Yeah. born like this, legend are there with us like this। तो वो कभी इसलिए बोलते हैं वो लोग कभी मरते नहीं, तो वी कैन ऑल्सो बी लाइक दैट। तो ऐसा कुछ काम करेंगे इस धरती के लिए, बाकी आने वाले जनरेशन के लिए, ताकि वो याद रखे कि हाँ कोई तो आया था। तो दिस इज द मैसेज टू ऑल ऑफ यू लिसनिंग टू दिस वीडियो। ऐसा कुछ करो कि पूरा दुनिया आपको आपके चले जाने Wonderful. के बाद ही याद Wow. रखे। Uh, there are no words actually. But it's a true thing. Like when you come to know about your purpose ना, तो ये अपने आप feeling आ जाती है. But the system doesn't let you work like that. और इसमें
सोसाइटी आ जाता है, गवर्नमेंट आ जाता है, पॉलिटिशियंस आ जाते हैं, सब हमारे जैसे ही लोग हैं, दिखते हमारे जैसे ही है, लेकिन कुछ कर रहे हैं वहां पर जिस वजह से जो अच्छा सोचना चाहता है वो नहीं कर पाता है, एंड दैट्स अ ड्रॉबैक टू कम इन दिस एआई और सोशल मीडिया टेक्नोलॉजी वाले वर्ल्ड में. बट स्टिल वी हैव गुड कनेक्शंस लाइक दीज. तो हम लोग वापस उसी पॉइंट पर आकर हमारा जो मेन पर्पस है उस पर अगर फोकस करें तो राइट we can achieve those small राइट goals every day, maybe in a week or month. So I do say, like, understand your purpose, and at the moment when you feel that this is your purpose, obviously you're going to have a great name when you even die. तो After even your death, people are going to remember you, remind you. So this is like I राइट have uh, और एक got पॉइंट the भी point here ये राइट that ये whatever पॉइंट I भी है। do, तो मेरा I नाम have to होने से have. ज्यादा जरूरी है वो इनिशिएटिव का नाम, वो Mhm. जो सिस्टम, वो जो बोल सकते हैं जो भी है, जो काम है, Mm, उसका नाम आगे होना ज्यादा जरूरी है। तो उससे क्या होता है, ना मेरा नाम होगा, ना mm, आपका नाम होगा, ना वो 100 या 200 या 1000 या 1 लाख लोगों का नाम होगा। एक ऐसा कम्युनिटी का नाम होगा, एक ऐसा इनिशिएटिव का नाम होगा जो हजारों साल चलता रहे। जो इनिशिएटिव ऐसे ही mm. लोग बनाए थे ना, एग्जैक्ट जिसके थ्रू एग्जैक्ट लोग एग्जैक्टली आपको याद अदर वे करें, राउंड। ना कि वो आपके थ्रू उस इनिशिएटिव इनिशिएटिव को मेरे याद को करें. याद है, वो इनिशिएटिव चलता रहेगा, बहुत लोगों को फायदा देगा, या तो या हम लोगों को याद करेगा कि हाँ ये ऐसा हम्म इनिशिएटिव ये लोगों ने स्टार्ट किया था। तो आप जैसे बोले कि बहुत सारा रेस्ट्रिक्शंस है हमारे इसमें, बट ये भी सोचना है कि ये जो भी रेस्ट्रिक्शंस जो भी चीज है, दिस आर ऑल मैन मेड। हम्म तो किसी ने तो भी ये सब चीज का था, किसी ने तो भी ये सिस्टम बनाया था। तो अगर या अगर कोई ये सिस्टम बना सकता है, तो ये सिस्टम का तोड़ भी हम्म कोई एक इंसान बना सकता है। वी हैव ऑल द पावर, राइट राइट क्यों नहीं. तो एग्जैक्टली। इस अगर खुद स्टोरी ने को बोलते क्रिएट हैं किया है तो वैग द डिस्ट्रॉय भी डॉग। हम खुद ही कर आपने मूवी सकते हैं देखा ना वो, उसको. वैग द इज डॉग, इन वन मूवी इज आवर देयर। हैंड. वैग द डॉग का मतलब द डॉग ऑलवेज वैग द टेल, राइट। ओके. बट देयर आर सम काइंड ऑफ या टेल प्रेजेंट हु वैग द डॉग, so that is the story of the tail। तो या बहुत सारे कम मतलब या कमजोर दिखने वाले, हाँ, बहुत मायूस या बहुत नरम प्रकृति के लोग होते हैं हम्म इस दुनिया में, हाँ, जिनको देख के समझ में नहीं आता है। दे कैन एक्चुअली वैग द डॉग, वैग द डॉग, दे कैन हम्म एक्चुअली कंफ्यूजन सिस्टम होता है को बदल उनको देख के. सकते हैं। तो बी वेयर ऑफ देम। और या ऐसे ऐसा ऐसा दिन या आने वाला है, ये सब लिखा हुआ है। आप अगर गीता को बहुत अच्छे से पढ़ते हो तो हम्म गीता में एक एक हम्म चीज पूरा लिखा हुआ है। और गीता बोलिए, भागवत बोलिए, वेद बोलिए, उपनिषद बोलिए, हम्म सब में ये सब लिखा हुआ है। तो गीता का एक छोटा सा मैं आपको बताता हूँ। यदा यदा हि धर्मस्व ग्लानिर्भवतु भारत अभ्युत्थानम हम्म अधर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतम् धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। तो ये डिसाइडेड है, ये गीता में लिखा वाला है कि अधर्म का विनाश करने के लिए और धर्म का प्रतिष्ठान करने के लिए युग युग में वो आते रहेंगे। तो चिंता क्या है, कोई चिंता की हम्म जरूरत नहीं है। वाह. कोई बात ही नहीं, सब होने वाला कोई टेंशन है। की बात ही बिंदास नहीं है, जियो। सब ठीक होने वाला है. वही होने, सब क्योंकि हम अपने सोच रहे फेवर में, वही हम जो जो सोच वो रहे हैं वो चाहता है, होने वाला है. जो वो चाहता है वो। बहुत अच्छा. हाँ, completely, completely. I got this. Like this is an eye-opening session for me, पूरा का पूरा. और मुझे नहीं पता था कि ऐसा कुछ होने वाला है. तो it's like a big surprise. Like it's a sign for me. Like okay, open your mind right now, and whatever you are doing, it is completely going in the एग्जैक्टली, right way. तो मुझे एक साइन मिल गया कि मैं जो कर रही हूँ वो एकदम ठीक कर रही हूँ, और मैं जो सोचती हूँ वो भी सही सोचती हूँ. तो बहुत अच्छा हो गया. तो
No. we have come Sorry. to the end part of the session. I'm very sorry to say this. Hmm. Otherwise हम लोग और 2 घंटा 3 घंटा बात कर सकते हैं. But last thing is हमको ग्रोथ की जरूरत होती है. तो मेरे शो को भी ग्रोथ की जरूरत है. एंड फॉर दैट आई आस्क ऑल द गेस्ट हुएवर कम्स ऑन माय शो. एक लास्ट क्वेश्चन मैं ये पूछती हूँ कि मुझे आप फीडबैक क्या दोगे. सो आई वुड लव टू हैव अ फीडबैक फ्रॉम यू तो ऑन द शो दैट आई स्टार्टेड फर्स्ट ऑफ ऑल, कॉल्ड द जैसे मैंने लेजिट टॉक्स. बताया, ये शो मैंने चालू किया, ये सेशन हम लोगों ने स्टार्ट किया बाय थैंकिंग द लेजेंड टॉक. आप कुछ बताने से पहले ही मैं मेरे फेसबुक में मेरे ऑडियंस को ये मैसेज दे दिया कि आप कनेक्ट हो जाओ. यस. आपका जो लिंक है, जो आपने पोस्ट किया, वो लिंक मैंने फेसबुक में ऑलरेडी डाल दिया था ताकि लोग कनेक्ट हो पाए. उनको मैंने ये रिक्वेस्ट कर भी दिया कि लेजिट टॉक दे she is hosting me, so I'm thankful to her and please support her too. तो ये मेरा एक नेचर है. मैं जिसके साथ भी रहता हूँ उसको अपना ही समझता हूँ, और उनका कुछ मांगने से पहले ही मैं उनको कैसे क्या दे सकता हूँ ये मैं पहले से ही सोचता हूँ. और यही कर्मा पॉइंट्स है. जिसको पता लग गया कि कर्मा पॉइंट्स कैसे कमाना होता है, तो वो इसी तरीके से जीते हैं कि ऑलवेज गिव फर्स्ट. मेरे सेशंस में मैं ये भी बोलता हूँ, जो मेरा कुछ ट्रेनिंग है उसमें मैं ये पॉइंट जरूर बोलता हूँ कि किसी से भी पहले एक बार मिलो, ऑलवेज गिव फर्स्ट, गिव समथिंग फर्स्ट. वो एक आपका सजेशन हो सकता है, वो एक छोटा सा एक चॉकलेट हो सकता है, या कुछ भी हो सकता है. तो ऑलवेज गिव फर्स्ट. जब भी आप कोई चीज एक बार किसी को दे देते हो, तो नाउ इन द आपके इसमें एकदम अच्छे जगह पे हो, पोजीशन आपका अच्छा हो जाता है. तो आई ऑलरेडी गेव गेव अ गुड व्यूज टू यू, गेव अ गुड सजेशंस फॉर यू, एंड बाकी आपके ऊपर. नाउ इट्स इन योर टर्न, बॉल इज इन योर कोर्ट. और जाते जाते एक ही चीज बोलूंगा कि मैं शेरो शायरी भी करता हूँ, कुछ कुछ लिखता हूँ. आज मेरा वाला आज अभी तक कुछ बोलना हुआ नहीं, बट जाते जाते एक चीज हमेशा बोलता हूँ कि हजारों मंजिलें होगी, हजारों कारवां होंगे, हजारों मंजिलें होगी, हजारों कारवां होंगे, निगाहें हमको ढूंढेगी, ना जाने हम कहाँ होंगे. ये मेरा लिखा हुआ नहीं है, किसी और का लिखा वाला है. तो मैं शेरो शायरी एक टाइम पे करता था. मेरा शायरी का डायरी भी है, उसमें काफी सारा लिखा हुआ है. वो लिखते लिखते करते करते मैं भी खुद बहुत सारा चीज लिखने लग गया. तो उसमें से एक छोटा सा एक बता देता हूँ. तो दैट इंस्पायर अ लॉट ऑफ पीपल. लाइक उगते हुए सूरज को तो हर कोई सलाम करता है, उगते हुए सूरज को तो हर कोई सलाम करता है, और डूबते हुए सूरज का भी एक पैगाम मतलब स्टोरी. उगते हुए सूरज को तो हर कोई सलाम करता है, पर डूबते हुए सूरज का भी एक पैगाम होता है. अपने अंदर की उस सूरज को जो पहचाने, अपने अंदर की उस सूरज को जो पहचाने, हर मंजिल हर मकाम उसके नाम होता है. Wow. It's written by You have written this. It's my realization. Wow. Wow, this is very nice. Like this is through your eyes and this ये is मैं through समझता हूँ. your feeling. Amazing. No, I liked it. no. You have. करना है. Did you publish a Yes, book or something on करेंगे, शायरी? जरूर करेंगे. Please do it. थोड़ा सा छोटा सा बुक निकालो, जरूर. उसमें सब अपनी शायरी उसमें डाल दो. कितना अच्छा रहेगा. So I am so happy that I had a conversation with you. I came to know about your life, your story, and I had no idea that what you have gone through. And it was like a big surprise to me. I felt that. And this is like a wonderful thing that I do. I feel I always feel this. Like through this show, I get to know so many journeys, understand their problems, learn from their experiences, learn from their mistakes. But one thing also is a different kind of a connection that happens with the stories. Because there are certain points when the people say कुछ कुछ जो हुआ रहता है उनके साथ थोड़ा सा मुझे भी कनेक्ट हो जाता है. तो
फील होता है कि humans are like still having their own experiences but they are living, you know, Exactly. वो एक जगह बैठे नहीं है, वो कुछ ना कुछ कर रहे हैं, they are moving on. So I learned that from everyone, like keep doing whatever you do, keep doing whatever you love. सब कुछ अच्छा ही होगा आगे जाकर because you're putting your 100% in the work that you really love. So it is going to have a great impact on at least few people, but it is going to. So this is a great session I had so far, and I am so happy to have you on my show. I am so happy to that I learned a lot from you, your journey, and I am so happy more that Right. people are going to listen to this and they are going to connect with their journey. So this is like a I am trying to build up a community here where every common person can easily Exactly. speak up to another common person and say, भाई मेरे को help चाहिए. ऐसा नहीं है कि ठीक है ये ऐसा ऐसा होता है ऐसा ऐसा कर लेना नहीं यू हैव टू टेल द ट्रूथ ये सच्चाई होती है और ये सच्चाई बहुत सारे शोज में नहीं बताई जाती और मैं एक्चुअली शो इसलिए ही Right. चालू की थी कि मुझे सच्चाई पता पड़े पहले कि क्यों Exactly. ऐसा सब कुछ होता है मेरे पास बहुत सारे सवाल हैं लेकिन वही टाइम लिमिट कन्फाइन पूछो जितना पता है उतना ही जानकारी निकालने की कोशिश करो तो आई ट्राइड माई बेस्ट बट Ex- 10 में से सिर्फ अभी तक के मैंने Uh, 2 या 3 ही क्वेश्चन पूछे हैं सब कुछ ऑलरेडी सामने no, ही no. आ गया तो आई आई अंडरस्टूड एवरीथिंग Exactly. थैंक यू सो मच एंड आई डू फील लाइक अगर कुछ ऐसा प्रोजेक्ट मेरे दिमाग में है जिसमें हम लोग यू नो ग्रुप या कंपनी या फिर कुछ Exactly. लोगों के साथ मिलके हम लोग एक ये कर सकते हैं Exactly. टॉक शो कर सकते हैं तो आई डेफिनेटली कनेक्ट विथ यू if you are free Exactly. then you can give some time to the show and we can connect like that Thank so you. again thank you loads for Thank you. coming on Thank our you. show and blessing us with your journey. Thank you so much, Subhashis. Bye bye. Thank you so much everyone for supporting our talk show The Legit Talks. Do share your views on this particular video. If you really feel that this particular person's journey resonates to your friends or families, do not forget to share them this link. And for more such amazing journeys, do hit the subscribe button and also press on the bell icon to get notified on every new video. Thank you so much guys. See you next time. Let's know the end.